Hello everyone, myself Professor Chavan. We have started the second chapter from our 11th Science CBSE board for the subject physics. In previous lecture, we have learnt about the different SI units and their definitions, how we can define that particular unit. Okay, but if we see those particular units are only we are using for the international standards only. Okay, some of them we are not using in our day-to-day life. So what if we have to go for the measurement of that particular physical quantity in our day-to-day life? जैसे कि हमें कुछ डिस्टेंस मेजर करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? We are measuring the distance in terms of length, that is in terms of the meter. Okay, but what if we have to go for the larger unit, the larger distance? Then instead of saying the 1000 meter, we can say that it is the 1 kilometer. Instead of saying the some yards, we can say that it is that much of kilometer. Okay, so like this we can go for the different units which are different for the SI units for our convenience. Okay, जैसे कि हमने हमारी SI यूनिट्स देखें, वो SI यूनिट्स हम डे टू डे लाइफ में नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो कन्वीनियंट नहीं है हमारे डे टू डे लाइफ में. अगर हम बहुत सारा कोल खरीदी करते हैं तो फिर उस टाइम अगर कोल को हम केजी में मापने लगे तो फिर क्या होगा? बहुत बड़ा नंबर हमें याद रखना पड़ेगा. तो फिर हम क्या करते हैं? कोल को क्या करते हैं? टन में मापते हैं. तो फिर टन क्या हुआ? टन एक हमारा डे टू डे लाइफ का यूनिट हो गया. तो फिर ये जो कुछ भी यूनिट है जो हम अदर देन एसआई यूनिट्स सोचते हैं उनके बारे में, जो कुछ भी यूज करते हैं उनको बोलते हैं फिजिकल यूनिट्स. And we are going to learn today about the physical units, which are the physical units for the different physical quantities with respect to their SI units. Okay, so we'll see the physical units. First one we'll see about the length. लेंथ का SI यूनिट क्या है? इट इज द SI यूनिट इज मीटर. देन व्हिच आर द फिजिकल यूनिट्स? कौन से फिजिकल यूनिट्स? हमको पता है लेंथ, हम जहां भी जाओ हमें लेंथ मेजर करनी पड़ती है. तो फिर उस टाइम फिजिकल यूनिट्स कैसे यूज करते हैं हम? अगर हमें अर्थ के और बाकी प्लैनेट्स के बीच में डिस्टेंस मापना है तो फिर हम कैसे माप सकते हैं? उसके लिए अगर हम मीटर के लिए जाएंगे तो फिर कितना बड़ा नंबर हमें याद रखना पड़ेगा? द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड एनी प्लैनेट और एनी प्लैनेट बिटवीन द अनदर प्लैनेट, इट इज वेरी लॉन्ग. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर रिमेंबरिंग दैट टू मच लेंथी नंबर, we can go for the physical unit. Okay, so one unit is used in astrology for the distance between the planets. Okay, and that unit is known as the astronaut unit. Okay, first one we will see the astronaut unit. So one astronaut is equal to how much distance? It is the mean distance between the earth and sun. Okay, it is the mean distance between earth and sun. Okay, then how much is this distance? कितना है ये distance? One astronaut is equal to 1.5 into 10 raised to 11 meter. So how much long this distance is? अगर हम इसको मापने लगे तो फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमको इसको याद रखना है 1.5 और इसके आगे
11 जीरो। तो फिर हम कैसे याद रखेंगे, हम याद नहीं रख सकते। ओके, ये डिफिकल्ट है। उसके लिए हमने क्या किया, ये जो बड़े बड़े डिस्टेंस रहते हैं उसको कन्वर्ट किया एक अलग वाले यूनिट में, और उसके लिए हमने 1 यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉट यूनिट यूज किया इन केस ऑफ द प्लैनेट्स। ओके, तो जब भी कभी हमें प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस मापना है तब हम क्या करते हैं, इस एस्ट्रोनॉट यूनिट का यूज करते हैं। ओके, सो इट विल बी इजी वन फॉर अस टू रिमेंबर दिस measurements, okay, because these are very high measurements. Okay, now if we think about the stars, okay, the stars are also like the planets, they are also away from each other, and for measuring the distance between the stars also we have to use one unit, and that unit is known as the light year. It is light year. Okay, तो हमको पता है कि लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा रहता है। कितना रहता है वो, 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर डिस्टेंस लाइट के रेज ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, तो 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर ट्रैवल कर सकते हैं। तो फिर एक साल में लाइट कितना ट्रैवल कर सकती है, वो होता है 1 लाइट ईयर। वो क्या रहता है, 1 लाइट ईयर। और उसी हिसाब से हम स्टार्स के बीच में का डिस्टेंस ट्रैवल चेक करते हैं, या फिर हमारे अर्थ से वो स्टार कितने दूरी पे है ये हम चेक करते हैं। अगर हमको अभी एक स्टार दिखाई दे रहा है तो वर्षों पहले वहां से उसने लाइट इमिट की है, उसने लाइट छोड़ी है जो कि अभी हमारे पास आ रही है। तो फिर वो कब छोड़ी है, कब छोड़ी है? अगर एक स्टार से हमारे पास लाइट आने के लिए 20 साल लग रहे हैं, अगर ये बात हमको पता है तो फिर 2 चीजें हमको पता चलती है। एक तो वो स्टार हमसे कितनी दूरी पे है, और उससे जो लाइट निकली है वो कब निकली है। क्योंकि हमको पता है कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू हाउ मच डिस्टेंस। ओके, तो एक साल में लाइट कितना ट्रैवल कर सकती है, देखते हैं। 1 मिनट में, 1 सेकंड में कितना करती है, 3 × 10⁸ मीटर। तो फिर 1 मिनट में कितना करेगी, इंटू 60। ओके, 1 मिनट में 3 × 10⁸ इंटू 60। देन 1 घंटे में कितना करेगी, इंटू 60। ओके, देन 1 दिन में कितना करेगी, कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। ये हो गया, एक दिन में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। अब एक साल में कितना करेगी, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 365 एंड वी विल गेट वन नंबर, इट इज 9.56 × 10⁻15 मीटर। तो एक साल में इतना डिस्टेंस लाइट ट्रैवल कर सकती है, 9.56 × 10⁻15 मीटर। ये कितना बड़ा डिस्टेंस हो गया, इसको हम याद रख सकते हैं क्या? अगर 2 स्टार्स के बीच में का डिस्टेंस हमें याद रखना है तो फिर हम उसको अगर मीटर में याद रखने लगे तो इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। सो वी हैव टू यूज दिस यूनिट, द लाइट ईयर, व्हिच मेक्स अस इजी एंड कन्वीनियंट टू रिमेंबर द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स। हमने देखा कि एक स्टार 20 साल उसका 20 लाइट ईयर उसका टाइम डिस्टेंस पे है। तो फिर कितने डिस्टेंस पे रहेगा वो, डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम अर्थ कितना आएगा, 20 लाइट ईयर्स मीन्स 20 into 9.56 × 10⁻15। Okay, ये हो गया उसका डिस्टेंस। देन 1 लाइट इज इक्वल टू हाउ मच, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, सो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, वी आर गेटिंग 6.3 × 10⁻4 एस्ट्रोनॉट यूनिट। ओके, 6.3 × 10⁻4 एस्ट्रोनॉट यूनिट। तो लाइट ईयर बड़ा हो गया या एस्ट्रोनॉट यूनिट बड़ा हो गया? कौन सा बड़ा यूनिट है?
लाइट ईयर बड़ा यूनिट है, क्योंकि 1 लाइट इज 6.3 into 10⁴ times the astronomical unit. Okay, that's why light year is the major distance than the astronomical unit. Then we have to go for the third unit, that is the it is parsec. Okay, third long distance unit for the length, it is the parsec. तो भाई parsec क्या होता है? 1 parsec is equal to how much distance? Okay, 1 parsec is equal to 3.26 light year. Okay, 1 parsec is equal to 1 parsec is equal to 3.26 लाइट ईयर. मतलब अगर हम देखेंगे कि इन तीनों यूनिट्स में से कौन सा यूनिट बड़ा है, पारसेक बड़ा है, लाइट ईयर बड़ा है, या एस्ट्रोनॉमिकल बड़ा है? पारसेक बड़ा है, क्योंकि 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर्स. ओके, 3.26 into 6.3 into 10⁴ is equal to that astronaut. Okay, so what do you mean by 1 parsec unit? So for that purpose we have to consider one arc which is having the length equal to 1 astronomical unit. Okay, if here is one arc, this arc is having the length of 1 astronaut unit, then the radius of the arc will be 1 parsec. Okay, it will be 1 parsec when this arc is including an angle of 1 second at the center. Okay, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये क्या होगा? 1 second. क्या एंगल होगा ये? 1 second. So when the arc having the length of 1 astronaut will make an angle of 1 second at the center, then the radius of that arc will be equal to 1 parsec. Okay, this radius indicates the distance of 1 parsec. अब 1 सेकंड का आर्क मतलब 1 सेकंड का एंगल मतलब क्या होता है आपको पता है? 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू कितने? और 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री अपॉन 60. देन 1 सेकंड इज इक्वल टू क्या होगा? 1 मिनट अपॉन 60. 1 मिनट का जब हम 60 कंपोनेंट में जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो फिर हमको मिलता है 1 सेकंड. पता है ना आपको? 1 सेकंड इज इक्वल टू 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट. ओके, 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट. सो 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच? 1 सेकंड इज इक्वल टू हाउ मच मिनट? इट इज क्या है? 60 का एक पार्ट मतलब 60 सेकंड का, और 1 मिनट का 16th पार्ट मतलब 1 सेकंड है. That's why we have to consider here that angle, that much small angle we have to consider here. That is 1 second is the angle for the 1 astronaut unit arc. Then the radius of that arc will be equal to 1 parsec. Okay, so these are the 3 long distance unit which we have to use for measuring the distance between the planets or earth or the stars. Okay, so these 3 units are largely used in case of the astrology. Okay, aerospace में ये वाली यूनिट्स यूज की जाती है. Okay, अब हम डे टू डे लाइफ में कौन सी यूनिट्स यूज करते हैं आपको पता है? डे टू डे लाइफ में जब हम डिस्टेंस मापते हैं तो फिर कौन सी यूनिट हम यूज करते हैं? ज्यादातर इंच होता है, फीट होता है, यार्ड होता है, माइल होता है. ओके, बट हाउ
we can convert that unit into each other. That part we will see now, how to convert. Okay, just take the snapshot of this. We will take the next units, day-to-day life units. Okay, so these are the aeronautical units. Okay, then we'll see 1 inch is equal to how much meter. क्या होता है 1 inch is equal to 0.0254 meter. Okay, 1 inch is equal to 0.0254 meter. Then 1 feet is equal to 0.3458 meter. Okay, 1 foot is equal to 0.3458 meter. Then the next unit we are using, it is the yard. 1 yard is equal to 0.928 meter. Okay, 1 yard is equal to 0.928 meter, or if we think it in case of the feet, then it is equal to 3 feet. Okay, 1 yard is equal to 3 feet. Then 1 mile is equal to how much meter? 1 mile is equal to 1.6 into 10 raised to 3 meter, or we can say here 1710 yard. Okay, 1 inch is equal to 0.0254 meter. 1 foot is equal to 0.3458 meter, and 1 yard is equal to 0.928 meter, or it is equal to 3 feet, or the 1 mile is equal to 1.6 into 10 raised to 3 meter. Okay, so this is about the linear lengths. But when we have to go for the some curvature distance like this, okay, so when the aeroplane takes off, actually how much distance it is covering? When the aeroplane is take off from this point, and also if we measure this length, then the distance of this length and this length is different. मतलब अगर एरोप्लेन हॉरिजॉन्टली जाता है तो फिर वो इस तरह से डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन जब ऐसा जाता है प्रोजेक्टाइल में तो फिर यहां पे अलग वाला डिस्टेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं? नॉटिकल यूनिट. ओके, 1 nautical unit. Then 1 nautical is equal to how much distance? It is equal to 1852 meter. Okay, 1 nautical is equal to 1852 meter. आपको समझ में आया? 1 nautical is equal to क्या होता है? जब यहाँ पे हम 1852 मीटर डिस्टेंस कवर करते हैं, तब एरोप्लेन अगर हमारे ऊपर हो यहाँ पे, तो फिर ये कितना डिस्टेंस कवर करता है? 1 नॉटिकल. ओके, 1 नॉटिकल. अगर एरोप्लेन जब टेकअप होता है उसी के साथ हम हॉरिजॉन्टली मोशन करते हैं, और अगर हम 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, 1 किलोमीटर, तब एरोप्लेन ने भी 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया होता, उसने अलग वाला डिस्टेंस ट्रैवल किया होता है, क्योंकि उसको क्या करना पड़ता है? ऐसा कर्व पाथ फॉलो करना पड़ता है. ओके, उसको पहले कर्व पाथ फॉलो करना पड़ता है. इसके लिए उसके अलग वाला डिस्टेंस दिया जाता है, अलग वाला मेजरमेंट उसको दिया जाता है. वो क्या होता है? 1 नॉटिकल. ओके, so that distance is measured in terms of the nautical, and how much is the 1 nautical? It is equal to 1852 meter. Okay, 1852 meter. So this is about some day-to-day life distances. Now what about the smaller distances? जैसे कि हम कुछ बायोलॉजी का स्टडी करते हैं, एटम्स का स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूल्स का स्टडी करते हैं, तब वहां पे कौन से यूनिट्स हमको यूज करने पड़ते हैं? ओके,
So there are the different units. Okay, these are the different units. उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ अलग वाले यूनिट्स यूज करते हैं. जैसे कि हमको पता है, हम बोलते हैं 1 माइक्रॉन. तो 1 माइक्रॉन मतलब क्या होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर. 1 नैनो, 1 नैनोमीटर मतलब क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर. Then the next we see the 1 Armstrong. 1 Armstrong is equal to 10⁻⁻10 meter. Then the next we'll see it is the 1 Fermi. Okay, 1 Fermi is equal to how much distance it is? It is equal to 10⁻⁻15 meter. Okay, 10⁻⁻15 meter. Now where we have to use these units for the measurement of the length? तो हमको पता है माइक्रोन, हमने देखा है इन केस ऑफ फिजिकल वर्ड फर्स्ट चैप्टर, जो कुछ भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनका साइज 10⁻⁻6 के नीचे रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी क्वांटिटी, माइक्रो क्वांटिटीज. ओके, so whenever we have to go for the study of the micro quantities, the micro components, then we have to use this unit, the 1 micron. Whatever their length is termed in case of this with the help of this unit. Then the nano, 1 nanometer means 10⁻⁻10 meter. ए वाला यूनिट कहां पे यूज करते हैं, ए वाला यूनिट हम यूज करते हैं जहां की मॉलिक्यूल्स का स्टडी करना पड़ता है. ओके, जहां पे मॉलिक्यूल्स का स्टडी करना पड़ता है. अब ए वाला जो यूनिट है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, इट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर. ए वाला यूनिट हम जब स्टडी करते हैं एटम्स का, प्रोटॉन्स का, न्यूट्रॉन्स का, तभी हमको ए वाला यूनिट यूज करना पड़ता है, 10⁻⁻10 मीटर. Then 1 Fermi is equal to 10⁻⁻15 meter. So where we have to use such a small scale, such a small scale we have to use in case of the electrons, because the radius itself has the equal to 10⁻⁻15 for the electron. Okay, so these are the some small units which we have to use for the measurements. Okay, micron कहाँ पे use करते हैं, for the microscopic observations. Okay, microscopic observation. नैनो वाले कहाँ पे यूज करते हैं, इन molecules. Astronaut in the atoms, protons, और ये वाला electrons. Okay, so likewise you can get which unit we have to use for which physical quantity. Okay, so these are the some smallest unit, these are the some medium units, and the longest unit we have seen, that is the 1 astronaut unit, then 1 light year, and the 1 parsec. Okay, so these are the some units of the length which we are using as the physical units. Okay, so these are the some physical units of the light. Okay, and what is the SI unit of light? It is the meter. Just we have to convert this meter into the different physical units. They are having some relation between them. Okay, so that's how we can go for the physical units. Okay, now we'll see about the some practical units of the area. Okay, so which are the practical units of area? We know this is also in terms of the length, but the area is measured in terms of the meter square, and as the location changes, some physical units, some practical units are used for the area. So which are those units? If you go in Haryana, then the farm is measured in terms of the acre. The area of the farm is measured in terms of the hectare. Okay,
in terms of the hectare. So practical units for area. 1 acre is equal to how much area? 1 acre is equal to 4047 meter square. Okay, 1 acre is equal to 4047 meter square. Now 1 hectare is equal to how much area? 1 hectare is equal to 10 raised to 4 meter square. मतलब 10 square into 10 square. Okay, 10 square into 10 square, that is equal to 1 hectare. अगर हम अलग अलग लोकेशन में जाते हैं, जैसे कि पंजाब में हमने देखा, हरियाणा में हमने देखा कि हेक्टर यूज करते हैं, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में एकड़ यूज करते हैं, वैसे ही किस जगह पे मैरला यूज करते हैं, कहीं पे क्या यूज करते हैं, मेगा यूज करते हैं. इस तरह से अलग अलग वाले यूनिट्स है जो कि हम एरिया के लिए एज ए प्रैक्टिकल यूनिट यूज करते हैं. अगर हम वॉल्यूम के बारे में देखेंगे तो व्हाट इज द एक्चुअल यूनिट फॉर द वॉल्यूम? ओके, प्रैक्टिकल यूनिट फॉर वॉल्यूम. वॉल्यूम किस चीजों का होता है? वॉल्यूम इज अबाउट द लिक्विड्स. ओके, वॉल्यूम इज अबाउट द लिक्विड्स. देन when we are purchasing the water, we say that give me the 1 liter of water. Okay, then what is the actual unit for the volume? It is cubic meter. Okay, it is used in meter cube. Then but we are using the liter. Then how much cubic meter is equal to 1 liter? For that purpose we have to consider one box which is having the height, length equal to 0.1 meter, it is equal to 0.1 meter, it is equal to 0.1 meter. Okay, so whatever the amount of liquid this box can consume, that amount of liquid is equal to 1 liter. Okay, so if we take the volume of this, it is equal to 0.1 into 0.1 into 0.1 is equal to 1 liter. So we will get is equal to 1 upon 1000 is equal to 1 liter. Or here we will get 1 upon 1000 is equal to 1 liter. That is 1 upon 1000 meter cube is equal to 1 liter. Okay, 1 upon 1000 meter cube is equal to 1 liter. So this is the unit conversion for the meter cube to the liter. Okay, so this is about the volume. Okay, this is the practical units for the area. These are the practical units for the volume. Now we will see the practical units for the mass. Okay, which are the practical units for the mass? These are the units which we are using for the calculation of the some physical quantities for our day-to-day life. So that's why these units are called as the physical units. Okay, now we'll see about the mass. It is having SI unit as the kilogram. लेकिन हम किलोग्राम सभी जगह पे नहीं यूज करते. अगर हम कुछ चावल लेने जाते हैं दुकान में तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं? मुझको 2 बैग चावल दे दो. ओके, 3 बैग चावल दे दो, या फिर मुझे 1 क्विंटल चावल दे दो. हम किलो में भी पूछते हैं लेकिन खरीदते हैं कैसे? 1 बैग में, 2 बैग में, 3 बैग में. तो फिर इस तरह से क्या किया है हमारे कन्वीनियंस के लिए, ये जो बैग्स रहती है चावल की, इनका ही एक फिक्स वेट कंसिडर किया जाता है. मतलब 1 बैग इज इक्वल टू
30 kilo or one bag is equal to 100 kilo. Likewise, these bags are manufactured for that particular amount of chawal, and we can purchase that chawal by using that unit, like give me the one bag, give me the two bag, or we can say there as the in terms of the quintal, मुझे 1 क्विंटल चावल दे दो. मतलब क्या होता है 1 क्विंटल, मतलब क्या होता है 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg. Okay, 1 quintal is equal to 100 kg. Now, whenever we have to go for the larger amount of the some components, likewise we consider the coal. Then if we have to purchase the coal, we don't go for every time the long number, like the 1000 kilo or the 2000 kilo or 10,000 kilo. What we are saying in terms of tons. Okay, so what is equal to 1 ton? 1 ton is equal to 1000 kilo. Okay, 1 ton is equal to 1000 kilo. So that will be convenient for us to go for the smaller numbers and using this quintal or ton. Likewise, whenever we are going for purchasing the some gold, then we are going in terms of the milligram. Okay, we are going in terms of the milligram. So 1 carat of gold मतलब कितना होता है 200 milligram. Okay, whenever we are going to purchase the gold, we purchase it in terms of the carat or in terms of the milligram. So if we purchase the gold, then we have to use this carat or the milligram unit. Okay, carat or the milligram units. So likewise, there are also some more units for the counting the mass. Okay, जैसे कि हमने देखा है कि पुराने जमाने में पाउंड एक यूनिट था जो हम यूज करते थे. तो फिर पाउंड कब यूज करते थे, और 1 पाउंड इज इक्वल टू हाउ मच किलोग्राम. ओके, 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.453 kg. Okay, 1 pound is equal to 0.453 kg. So we can go for these units. These are the some different physical units or day-to-day life units for counting the mass. And what is the conversion we have seen if we have to go for the SI units. Okay, so the physical units are the derived units which we are using in our day-to-day life. Now this is about the countable or the measurable which we can see. Now what about the smallest atoms or the molecules? For that purpose also 1 unit is there. Okay, there is also 1 unit for the atoms, that is the atomic mass unit. Okay, it is atomic mass unit. Then 1 atomic mass unit is equal to how much kilogram? It is equal to 1.623 into 10 raised to minus 27 kg. Okay, 1.623 into 10 raised to minus 27 kg. इतना छोटा मास रहता है एक एटम का. Okay, तो फिर ए वाला एटॉमिक मास यूनिट कहां से हमने लाया, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक एलिमेंट हमने सिलेक्ट किया कार्बन 12. कार्बन 12 ही क्यों? क्योंकि अगर हम देखते हैं ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट जो भी इस अर्थ पे अवेलेबल है उनमें कार्बन 12 के मॉलिक्यूल्स रहते ही है. ज्यादातर सभी 99% कंपोनेंट्स में कार्बन 12 एटम रहता है. उसके लिए हमने कार्बन 12 का एक एटम कंसिडर किया, जो कि उसको अगर हम 12 से डिवाइड कर ले तो कि जितना मास आता है वो होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट. नाउ विल सी सम प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर द टाइम. आप बोलेंगे कि टाइम के क्या प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं.
लेकिन टाइम के भी प्रैक्टिकल यूनिट्स है, क्योंकि टाइम के SI यूनिट क्या है? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ टाइम? टाइम SI यूनिट इज सेकंड। ओके, पिछले वाले लेक्चर में हमने एक चार्ट लिखा था। ओके, so what is the SI unit of time? It is the second, but we are not using the second at every place, but we are using the another higher units. We are saying like the excuse me just 1 minute, or excuse me for the 5 minute. Okay, so we are not using our conversion in terms of the second, but we are using some higher units, like give me the 2 hours to come back, or I will come tomorrow, or I will come after 3 weeks, or we will meet in the next year. So these are the some higher units of the time which we are using for our purpose, and these are the derived units. These are the actual physical units. Okay, so how much the 1 minute is equal to? It is 60 seconds. Then 1 hour is equal to 60 minutes. Then 1 day is equal to 24 hours. 1 week is equal to 7 days, and 1 month is equal to 5 weeks, and 1 year is equal to 12 months. Okay, 1 year is equal to 12 months. So we are using these higher units like the minute, hour, days, weeks, year, month for our day-to-day life conversion. We are not using the SI unit of the time, because that unit is for the international systems, for the international business, and day-to-day life we are using these small units, these higher units. Okay, and these are the derived units. These are the physical units of the physical quantity time. Okay, so these are the some unit for the physical quantity time, and we have seen which are the physical units for the mass. Like for the higher mass we are using the ton or quintal or the pound, and for the lower mass we can go for the atomic mass unit or the carat or the milligram. Also we have seen the conversion. Then in case of the area we are using hectare, acre, merla. Okay, according to the location we can go for the different units, and we must have to know about the conversion into the SI unit. Okay, then this is about the area. What about the volume? 1 meter cube is equal to 1000 liter. Then what about the length? We have seen the different physical units of the length from the longest distance to the smallest distance. Which are those? Like the some units are there, like the light year or the astronomical unit or the parsec. Okay, these units are used for the aeronautical purpose. Then in day-to-day life we are using like the inch, feet, then the yard, mile, or the nautical mile. Okay, so these are the some units for the day-to-day life distances. Then if we think about the smallest length, then we can go for the millimeter or the micrometer, nanometer. Okay, these are the smaller units of the length. So likewise we can go for the different physical units. We must know about their physical units and their conversion into the SI units. How we can convert those units into the SI units. Okay, so these are the some conversions from the SI unit into the some physical units. Then we will see some unit conversion techniques when we have to convert the some units into the higher quantities or when into the lower quantities. Then we have to use some prefix, and for that purpose which prefix we have to use, that we will see now. Okay, for the higher conversion and for the lower conversion.
Okay, for the higher conversion we can go for the higher conversion just we have to multiply that given unit by some particular numbers in terms of the decimals or in terms of the metric. Okay, like 1 deca, then we have to multiply by 10 raised to 1. 1 hectare, we have to convert by 10 raised to 2. 1 kilo, we have to multiply by 10 raised to 3. 1 mega, we have to convert by 10 raised to 6. 1 giga, we have to convert by 10 raised to 9. Okay, 1 tera, we have to convert by 10 raised to 12. Just we have to multiply that number, then we will get the higher units. Then what about the lower conversion? Lower conversion. Okay, for that purpose, similarly we have to multiply by some numbers in terms of the metric. Okay, 1 deci, n is equal to 10 raised to minus 1. 1 centi, it is equal to 10 raised to minus 2. 1 milli, it is equal to 10 raised to minus 3. 1 micro, we have to multiply by 10 raised to minus 6. 1 nano, then we have to multiply that term by 10 raised to minus 9. Then 1 pico, we have to multiply that term by 10 raised to minus 12. Okay, then we will get the lower conversions of that particular units. Okay, so these are the some unit conversion techniques we must have to remember, because in the numericals that it may be given some kilowatt of the energy is used or some megapascal is the pressure of that particular location, then we have to go for some unit conversion, because while we are going for the numericals, all the units must be in the same system, either in SI, either in CGS or either in the MKS. Okay, first step while going for the solving the numericals is convert all the given data into the same system, that their units must be in the one system. Okay, that's why we have to remember this all the conversion techniques. Okay, now the next one part we'll see about the physical quantity, that is the order of magnitude. Okay, what is the use of order of magnitude? Why it is important to go by studying the order of magnitude? Okay, this is one small topic from our second chapter, the order of magnitude. Order of magnitude. The order of magnitude actually tells us about how much bigger that number is, how much smaller that number is, because order of magnitude is given in terms of the metrics. Okay, because whenever we have to go for the conversion of the longest or the long number or the higher number into the one decimal conversion, then we have to give it in terms of the metric. Likewise, we have the number 64378. Then if we have to convert it into the one digit, then we are 6.4 into 10 raised to 1, 2, 3, 4, 10 raised to 4. So 4 is the power. Then what is the order? Here 4 is the power, then what is the order of this number? Okay, so for this, the order of magnitude, there are three rules. Okay, generally we are taking the power as the magnitude, but we have the three rules for finding out the order of magnitude, and those are: if the number at the highest place is
5 or the greater than 5, then we have to consider the order of that number also. Okay, because here we will see in this example that here power is 4, 1 2 3 4, but when we have to go for counting the order, then here the digit at the highest place, it is greater than 5. Okay, it is greater than 5. So in that case we have to consider the order of that number also, and accordingly the order of the total number we have to give. If the digit at this largest place is greater than the 5 or the 5, then the order we have to consider by considering that place of that number. So here what is the order? 1 2 3 4 5. So 5 is the order of this number. Okay, 5 is the order of this number. Then I will take the one more example, the 5 7 9 3. Then if we convert this into the unitary place, we will get 5.793 into 10 raised to 3. So here the power is 3. Okay, power is 3. But what is about the order? इस नंबर की order क्या है? According to the rule, the number at the largest place is, if the 5 or the greater than 5, then we have to consider the order of that number also. So accordingly, the order of this number is 4. Okay, because 1 2 3 4. So order of this total number is 4. Okay, order of total number is 4. Similarly, if we consider that 4 5 9 8, so how many digits are here? 1 2 3 4. How many digits are here? 1 2 3 4. So in this case 1 2 3, if we convert this into the unitary place, we will get 5 9 8 into 10 raised to 3. Okay, this is the power. Now what about the order? Order क्या है इस नंबर की? For the order we have to go by considering what is the digit at the largest place. It is 4, and this digit is less than 5. Okay, this digit is less than 5, so the order is only 3. We don't have to consider that digit while finding the order, क्योंकि a वाला जो नंबर है वो 5 से छोटा है. इसमें क्या है? a वाला जो नंबर है 5 से बड़ा है. Okay, that's why we have to count that number. यहाँ पे a वाला जो नंबर है 5 है, खुद 5 है, इसलिए हमको उसकी ऑर्डर काउंट करनी पड़ती है. Okay, so this is the order of magnitude. इसी तरह से हमको पता चलता है कि वो नंबर कितना बड़ा है. जैसे कि हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन की रेडियस कितनी बड़ी है, इट इज 10 raised to -15. सो ऑर्डर इज -15. -15 मतलब बहुत छोटा हो गया. बहुत छोटा नंबर हो गया, और उसी हिसाब से हम बोल सकते हैं कि अरे बहुत छोटा है. -15 मतलब बहुत छोटा है. ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन रेडियस इज वेरी स्मॉल. अगर उसी तरह से अगर हमने देखा कि अर्थ एंड सन के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इट इज इक्वल टू 1.5 into 10 raised to 11 meter. Here the order is 11. Okay, order क्या है? 11. तो फिर हमको क्या पता चलता है यार, इसकी जो ऑर्डर है इसके डिस्टेंस का वो बहुत बड़ा है, तो फिर डिस्टेंस बहुत बड़ा है. ओके, इसलिए हम अगर ऑर्डर पता है तो हम उसका इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितना बड़ा नंबर है. जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉन का देखा, ये बहुत छोटा है, 10 raised to -15. एटम का देखेंगे तो ये 10 raised to -10. Okay, so likewise we can go for finding the order of that particular atom, the particular distance, and accordingly if we know the number, then we can go for the order, and once we know the order we can find out the
how much bigger or how much smaller that number is. Okay, so this is the importance of the order of magnitude in the physics, because in the physics we have to go for the different quantities which are having also the smaller distances or the smaller count, or some quantities which are having the larger count. Then instead of going for remembering all these count, we can go for their order directly. Like order of the radius of the electron is very small, 10 raised to minus 15. The order of the distance between the sun and the earth, it is of the order 15. Okay, it is order 15. So यहाँ पे हमको पता चलता है कि वो कितना बड़ा नंबर है. That's the importance of order of magnitude. Okay, so that's all from the order of magnitude.